Let me log in into the portal. Okay. So today we will start a new topic, which is Azure Load Balancer. So yesterday we had the discussion regarding the web server. We have seen that how we can deploy the web server using IIS service in Windows environment. We have set up one of the normal web page over there, and we have seen the access as well. So today it's going to be a new topic in the Azure networking series. So let's start that one. It's very easy topic as well, and a lot of interview questions will be put up from this particular series. So the topic is load balancing solutions. Under the load balancing solutions, we have to discuss some topics like we will be discussing about Azure Load Balancer. We will be discussing about application gateway. We will be discussing about traffic manager. And there is one more topic which is not in our course, so we will not discuss that, which is called CDN and front door. In Azure, we have these four load balancing solutions. Load balancing के लिए चार solutions है Azure में. So one is Azure Load Balancer, application gateway, traffic manager, and CDN or front door. CDN and front door both are same. CDN stands for Content Delivery Network. So CDN and front door, this topic is basically the part of AJ700, which is Microsoft Certified Network Associate. So it is for the people who are into the networking in cloud. So this is a specialized certification. It is also there in AJ305, Microsoft Certified Solution Architect Expert, but it is not there in AJ104. Even Traffic Manager is also not there in AJ104, so it's not part of our syllabus. But yes, this is one of the topic which is important for the job perspective. So I will cover this one as well. I will not cover this one. This is not very much important. So otherwise, I could have taken this. Load balancer is the part of AJ104. Application gateway is the part of AJ104. Traffic manager is not there in AJ104, but yes, we will cover these three load balancing solutions. So by next weekend, these three topics will be completed. ये खत्म भी हो जाएंगे हमारे. Today I will start with the Azure Load Balancer under the load balancing solutions. So what is the meaning of load balancing actually? So generally what happens in a company, I discussed earlier as well, there will be cluster for the critical services. So let's suppose we have a cluster of three servers. तीन servers का cluster है, for example. They all are in the high availability mode. It can be in AS, it can be in AJ. It doesn't matter. या तो AS में होगा या AJ में होगा. So that's a different solution altogether. Now within these three clusters, my important web application is running. Yesterday we discussed about the web application. Suppose there is a web application which is very important for the company. मतलब कोई application, कोई portal चल रहा है for example, या कोई software चल रहा है. So on these three servers we are running the web application, and all of them are same because it is a cluster environment. So definitely whatever we are putting here, the same sort of configuration will be there on another servers as well. So the web application which is running here, the portal which is running here, same copy will be running here as well, same copy will be running here as well. Now the question is, I have 1, 2, 3, and 4 users. I have 4 users. They are sitting in a different location. They are some external users. कोई external user है, बाहर के बंदे. And let's suppose this web application is Flipkart site. मान लो इस पे Flipkart की site चल रही है. So here also the Flipkart copy is running. Here also the Flipkart copy is running. So when these people are trying to do the shopping, they will open their mobile or they will open their laptop and they will try to access flipkart.com, right? This is what they are going to do.
So they will type www.flipkart.com, or they will go to the Flipkart app to do the shopping. So whenever they will send the request to flipkart.com, the request will go to the primary server. Means the request will come here. Request सारी उठ के यहाँ पे आएगी, right? Because this is the primary server. This is the first server that we had set up. Now the question is, if all the request by default is going to hit only one server, then why we had set up the high availability cluster? भाई सारी रिक्वेस्ट अगर एक ही सर्वर को जाएगी तो एचए बनाने का क्या फायदा? Why there is a need of cluster? Now some people will say that under the HA we have set up AS. So we have set up the AS because if one VM in the rack goes down, so another VM will handle the load. That is fine. That is fine. That is the concept. But the situation here is, by default, all the users are targeting to only one server. But in my cluster, I have 3 servers. But they all are by default redirected to only one server. So they are getting the Flipkart through one server only. Now the situation is, because this is a server, so every server has a configuration. हर server की एक configuration limit है ना. If I have suppose 108 GB of RAM, 16 core of CPU in this server, so of course there will be a limit to handle the pressure. Might be from that configuration it can only handle the load of, let's suppose, 20,000 users at a time. एक time पे 20,000 users का load handle कर लेगा ये. But if it is more than that, it will not be able to handle. That is first situation. That is why we have set up the cluster. इसलिए cluster लगाया ना हमने. Another situation is, if this server goes down because of any technical issue, अगर ये server बंद हो गया, if it is crashed because of any IT issue, how these users are going to redirect it to another member servers? ये users कैसे switch करेंगे दूसरे servers में? There must be one of the configuration, there must be one of the setting which will redirect them to another member servers in case if one server goes down. There should be the capability of the servers to handle the load automatically. If the users are trying to access the flipkart.com site, it should not go always to one server. It should not always reach out to one server. We have 3 servers in the cluster. It should be equally distributed among these 3 servers. मेरे पास 3 सर्वर मैंने इसलिए लगाए हैं so that one server should not get stressed. एक सर्वर पे लोड ना आ जाए. That is why I have set up 3 servers. So whatever is the count, if let's suppose 9 users are trying to access the Flipkart site, so one user should be here, one should be here, one should be here, another should be here, here. Means 3 users should be connected to one servers. एक एक सर्वर पे 3 users का लोड होना चाहिए. So load should get equally distributed. There should not be pressure on one server regarding any service. Otherwise, that server will go down. It will have the performance issues. That is the first condition. Another condition is, by chance, due to any technical issue, if one server goes down, अगर एक server down हो भी जाता है, let's suppose this server goes down because of any tech issue, my environment should not get interrupted. If one server goes down, users should not get interrupted. They should be able to access the Flipkart. पहले वो यहाँ connected थे. Earlier they were connected here. They were getting the Flipkart page from here. If this server goes down, they should be automatically redirected to another member servers. They should not feel downtime. This is a technical field. Anything can happen. We cannot take 100% of guarantee. Flipkart site can also go down. Their servers can also go down. But it should not get feel to the user. User को feel नहीं होना चाहिए. Customer should not feel that Flipkart is down. Their load should be immediately transferred to another member servers. That is condition number 2. So in order to maintain the high availability in the environment, we use one of the solution in Azure which is called Azure Load Balancer. In order to maintain the load balancing, we use the Azure Load Balancer. So in case we have 3 servers in the cluster, if 2 users are trying to access the Flipkart site, the load balancer will ensure that these 2 users should get equally distributed among the member servers. If I have 3 servers, one user should be connected here, another server should be connected here. So this will ensure the equal load balancing. One server will not get a lot of stress in this situation.
If one server goes down because of any technical issue, so this user should be automatically redirected to another member server. So it should not give any kind of downtime situation. That is the job of load balancer. So load balancer is a resource in Azure which ensures the automatic or equal distribution of load among member servers. So how the load balancer is going to work? We will set up one of the load balancer in Azure. एक load balancer बनेगा Azure में, and this load balancer will be actually connected to the internet. So it will be a public service. It will be connected to the internet. It means it will have a public IP. इसके ऊपर एक public IP होगी. Why the load balancer will be connected to the internet? So that if there is any public facing service where the internet connectivity is required, so load balancer should be able to handle that traffic. For example, if the Flipkart sites are running on my server environment, so Flipkart site will be accessed by a lot of external users for the shopping. It's not internal, it's one of the public facing application. So people from different region, they will do the shopping. It's for ordinary customers as well. So that is why they can be from any location, they can be from any region. So how they will connect with the Flipkart site? Through the internet. So when they will send the request through the internet, the first request will drop to the load balancer. Servers को directly request नहीं जाएगी, because that's not a security best practice. We never send the request directly to the server if the users are external. Users will always send the request to the load balancer. The URL that we enter, www.flipkart.com, www.google.com, www.youtube.com, actually we are not directly hitting to their servers. हम कभी भी उनके servers को hit करते ही नहीं है. Until today, we guys were thinking that when we type www.google.com, so we are actually targeting to the Google server. No, Google will never reveal their server details to the user. If it will happen, then any hacker will attack to the Google server and server will go down. It will go crash. So no, when we talk about the public facing services, we never ever reach to the server directly, because server does not have any public IP. So how will you reach? Server पे तो public IP है ही नहीं ना. When you type www.google.com, that is an internet request. So that internet request will not reach out to the Google server, because server does not have any public IP. It's have the private IP only, and with the private IP you cannot do the external communication. So how that happens? Because the URLs are actually configured through the load balancing solutions. So whenever we type any URL on the internet, the request actually goes to the load balancer, not to the server. Servers को request नहीं जाती, load balancers को जाती है. With the load balancer, the member servers are connected, which is called backend pool. With the with the load balancer, the backend VMs will be connected. Suppose this is my VM number 1, VM number 2, VM number 3. So suppose I have 3 VMs in my cluster. So these VMs will be connected with the load balancer in the high availability mode. Same Flipkart application will be here, same will be here, same will be here. Now when the user will send the request to the load balancer, at a time, let's suppose we have 3 requests to the load balancer. Load balancer will check in the backend. This is called backend. These servers will never be exposed to the users. User को ये server expose होंगे ही नहीं कभी भी, because it has the private IP only. So load balancer will check that which server in the backend is free to handle the load. So if all of these 3 servers are free, the load of these 3 users will be equally distributed to these 3 VMs. One will be here, one will be here, one will be here. But let's suppose this server is not working. If this is down, load balancer will immediately get the signal that this particular server is down. Then these 3 users will be distributed between these 2 servers only. One will be here, one will be here, another one will be here. This is how the load balancer is going to work. So it is the job of load balancer to ensure that traffic should be equally balanced among member servers, among backend. Users will get the page of Flipkart. They will get it through the load balancer. Page will be diverted here, and through the load balancer, they would be able to access the page. So users will never communicate to the server directly because of security concerns.
So this kind of setup is also known as hub and spoke model in the security. So this is how the load balancer works. In the load balancer, there are some important components that I will discuss throughout the practical. But before that, let's go to the official document of Microsoft. So if you search about Azure Load Balancer, this is the official document. What is Azure Load Balancer? If you open it, so here you can see Azure Load Balancer operates at layer 4 of OSI model. OSI मॉडल की लेयर 4 पे काम करता है ये वाला लोड बैलेंसर एज्योर का. विच इज लेयर 4? It is transport layer. So Azure Load Balancer works on the transport layer of the OSI model, and you have to remember this for the interview. This is important. They will ask you the difference between application gateway and Azure Load Balancer. So application gateway I will discuss in the next weekend class. That is a different topic. That's a new topic. So for now, the Azure Load Balancer always works on layer 4, which is transport layer. So you have to remember this. It is a single point of contact for the client. As I told you, all the client means users. If any user wants to access any website, any application which is connected with the member servers, they will not directly reach out to the server. They will send the request to the load balancer. Load balancer will check in the backend which server is free, how the load will be distributed, and accordingly it will distribute the queries. Then the user will get the response. So it is a single point of contact for all the clients. User के लिए single point of contact यही है. If the load balancer goes down, the services will get impacted. Production will be impacted then. So it distributes inbound flows that arrive at the load balancer's front end to the backend pool instances. What is the meaning of this sentence? It means there are some component with the load balancer. For example, this is my load balancer. These are my member servers. So member servers here are known as backend pool. इनको हम बोलते हैं backend pool. Pool means collection of servers because there will be clusters connected. So backend pool means the servers which is connected behind the load balancer. That is called backend pool. Because the load balancer is directly connected with the internet. So of course it has a public IP. Load balancer has a public IP. Servers will not have any public IP. They will be operating with the private IPs only. So the front end is where the load balancer is connected with the internet. So the public IP of the load balancer through which the load balancer is connected to the internet is known as front end. तो जहां पे user request करता है, user can be in any location. When the user will request that I want to access, let's say www.flipkart.com, the request will come to the load balancer. So the arriving station where the request will come, that is called front end. तो उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं. सो द पब्लिक आईपी ऑफ द लोड बैलेंसर इज द फ्रंट एंड आईपी एरिया. दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, जहां पे रिक्वेस्ट आती है. हाउ द लोड बैलेंसर विल डू द लोड बैलेंसिंग? लोड बैलेंसिंग करता कैसे है? हाउ द लोड बैलेंसिंग विल टेक प्लेस? सो इट विल टेक प्लेस यूजिंग द एलबी रूल्स. एलबी रूल मीन्स लोड बैलेंसिंग रूल्स. So we have to set up the load balancing rules in order to redirect the queries to the backend servers. Load balancer always works on the basis of LB rules, load balancing rules. So whenever the query comes to the front end, load balancer will check in the load balancing rules how we have to transfer the queries to the backend. And according to the rule configured, the query will be transferred to the backend servers. Then the load balancing will happen. So it is the job of load balancer to do the load balancing. So this is the meaning of this sentence. These flows are distributed according to the configured load balancing rule. As I told you, load balancing rule setup करना पड़ता है हमें, and on the basis of that rules, the load balancing will take place. There is one option, health prop. What is health prop? So health prop basically means when I have a load balancer, and let's suppose we have 1, 2, and 3 VMs connected in the backend. Whenever any user will send the request to the load balancer front end, according to the load balancing rule, the query will be distributed to the backend. But due to some technical issue, might be due to some technical issue, this particular server is not working. It is down. ये down है. This is down. How the load balancer will get to know that this is down?
लोड बैलेंसर को कैसे पता चलेगा कि ये डाउन है? Because load balancer should know that this particular server is not working. Otherwise, load balancer will send the request to this server as well. भाई लोड बैलेंसर को बताओगे नहीं कि ये सर्वर डाउन है, तो वो तो क्वेरी उठा के यहाँ पे भी भेज सकता है, बिकॉज दिस इज फ्री. So load balancer should be aware that any server in the backend is down or not. How the load balancer will get to know that one server is down? It is through the health probes. There is a option HP, health probe. So in the load balancer itself, we have to set up the health probe option. So what health probe will do? Health probe is going to send the fake signals. It is going to send some temporary signals, temporary packets to all the connected member servers in the backend time to time. टाइम हम डिफाइन करेंगे. लेट सपोज वी हैव डिफाइंड दैट आफ्टर एवरी 5 minutes load balancer is going to send some temporary signals to all the member servers just to check whether they are live or not. So load balancer will send some of the signal to all the connected servers. It will send some temporary data packets. In the response, if they are able to give the response to the load balancer back, अगर वो response वापस दे देते हैं, it means they are healthy. Then the load balancer will send the request to the servers. If any one of the server is not responding, let's suppose this server did not respond back to the packet, to the signal, then the load balancer after certain time period will declare this server as unhealthy. अगर इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया लोड बैलेंसर को एक टाइम में, which is called health probe signal, then the load balancer will mark this as unhealthy. वो इसको unhealthy बना देगा. And if it is declared as unhealthy, load balancer will not send any traffic to this particular server. फिर वो इसको कोई भी लोड नहीं भेजेगा. This server will be out. Once it is online again, फिर से अगर ये ठीक हो जाता है, once it is back online again, then again after every as per the rule, after let's suppose after every 5 minutes, load balancer will send the signal to all the member server. If again it responds back, अगर इसने response दे दिया बाद में, then the load balancer will remove it from the unhealthy tag list. Then it will be ready for accepting the signals. So this is how it works, and these all are the important components of the load balancing solutions. So you have to remember this again for the interview. One is front end. Front end is very important component where the traffic actually comes to the load balancer. Another one is backend pool. Backend pool means member servers, which is connected with the load balancer. वो सब backend pools है. Then comes the LB rules. LB rules are the rules according to which load balancer is going to distribute the queries to the backend servers. Then comes the health probe. So health probe are some of the signals which is released by the load balancer time to time to the backend servers just to ensure whether they are healthy or not. वो healthy है या नहीं है, उसके लिए load balancer उनको signals भेजता है, which is called ready signals, ready or not signals. So the time duration will be defined by us in this scenario. Load balancing rule will also be defined by us. Front end will also be defined by us, and backend pool will also be defined by us. सब कुछ हम ही define करेंगे. Every setting, every control will be in our hand. So when it is on the cloud, the load balancing service is Azure Load Balancer. If it is on premises, if it is not on cloud, so in the on premises also we have the load balancing solutions in place. There they use the devices. वहां पे वो डिवाइस यूज करते हैं like F5 load balancer. इस टाइप का एक डिवाइस आता है. It looks like router. So this is one of the switch as well. So they use this kind of devices in the on premises. ऐसे लोड बैलेंसर आते हैं, ये फिजिकल लोड बैलेंसर्स है. सो इफ द कंपनी हैज द फिजिकल सर्वर्स environment, they set up these kind of physical load balancers, and it is totally managed by the network team in that scenario. So network team knows how to operate this. Then it will be not be the responsibility of cloud team. But if the servers are running on the cloud environment, so of course they will not use any physical load balancer. They will be using the virtual load balancer in the cloud. So they will be using the Azure Load Balancer in that case. And nowadays, the infrastructure is on the cloud. So definitely the Azure Load Balancer will be there. So this is one of the diagram which says how the load balancing happens. So from the internet, from any location, the query can come to the load balancer. Then it will be distributed to your backend pool.
through the load balancing rules. Why use the load balancer? So you can just go through with the benefits. मतलब इससे लोड बैलेंस होता है, इफ एनी सर्वर गोज डाउन सो हाई अवेलेबिलिटी कैन बी मेंटेन्ड, तो यही सब चीजें इसने लिख रखी है यहाँ पे. सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट, सो लोड बैलेंसर बाय डिफॉल्ट यूजेस द जीरो ट्रस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल. ये इस टाइप की सिक्योरिटी यूज करता है. इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, दिस इज द लिंक वेयर यू कैन चेक द प्राइसिंग कि कितना पैसा लगता है लोड बैलेंसर यूज करने में. सो this is how it is going to work. Now we can see the practical. Yes, Pooja. हेलो. Yes. हेलो सर, am I audible? Yes, yes, you are audible. ओके सर, अगर हम नेटवर्क टीम ऑन प्रीमाइसेस में, नेटवर्क टीम विल हैंडल दिस लोड बैलेंसर्स, बट व्हाट अबाउट द in Azure, so who will handle these load balancers in We Azure, will, like we will handle, we our will handle. cloud admin will handle, or It will be handled by the okay. cloud admin. If it is on the Okay sir. cloud, we are responsible for handling it. Okay sir. If it goes down, whatever configuration has to be done, whatever rules has to be assigned, whatever backend tool has to be changed, it will be the responsibility of cloud admin totally, not the network team. So network Okay team is sir. only liable when the load balancer is in the on-premises environment. If it is on the cloud administrator will be responsible for it. Okay sir. Okay. Yes. Okay. So now let's see the practical implementation of it. So for this practical, हेलो yes, सर, Rakesh. वीएमएसएस है ना, उसका भी ऐसे ही है ना? तो दोनों में डिफरेंस क्या, मतलब ये एडवांस लग रहा है वैसे. VMSs ये काम करता है कि अगर एक सर्वर पे लोड आ रहा है तो वो उसकी कॉपीज बना देता है, बट बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग नहीं करता ना. उसका ये सिनेरियो है कि एक ही सर्वर, मान लो तुम्हारे पास एक सर्वर है या दो सर्वर है बाय डिफॉल्ट, उन पे अगर लोड आ रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट इनके ऊपर लोड आ रहा है, तो वो उन सर्वर्स की कॉपीज क्रिएट करते चले जाएगा. अब कॉपीज बना देने के बाद भी लोड बैलेंसिंग नहीं करेगा वो. मतलब वो ऐसे नहीं करेगा कि अगर 10 यूजर्स एक साथ आ रहे हैं तो एक यहाँ भेज दूँ, एक यहाँ भेज दूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे नहीं करता वो. तो ये तो बीएमएसएस हो गया. और बीएमएसएस में बाय डिफॉल्ट ये होता है कि एक ही सर्वर या दो सर्वर आपने लगा रखे हैं, उनके ऊपर परफॉर्मेंस लोड आ रहा है, मतलब सारे रिक्वेस्ट उन्हीं के ऊपर आ रही है बाय डिफॉल्ट, तो वो इनकी कॉपीज बनाते चले जाएगा. वो बीएमएसएस का काम है. कॉपीज बना देने के बाद भी वो उन लोड्स को ट्रांसफर नहीं करेगा मेंबर सर्वर्स के बीच में, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तब भी नहीं करेगा वो. उसके लिए आपको लोड बैलेंसर लगाना ही पड़ता है बीच में फिर. इसलिए वीएमएसएस भी अगर कंपनी सेटअप कर रही है, सो दे सेटअप द लोड बैलेंसर अलोंग विद इट. तो जब भी लोड बैलेंसर के ऊपर लोड आएगा तो वो इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बैकएंड ग्रुप में. अब मान लो हमारा जो बैकएंड ग्रुप है अगर वो भी कैपेबल नहीं है, बैकएंड ग्रुप में मान लो मेरे पास दो सर्वर्स है और वो भी कैपेबल नहीं है उस लोड को हैंडल करने के लिए, देन एज पर द वीएमएसएस अनदर मेंबर कॉपीज ऑफ द सर्वर्स विल गेट क्रिएटेड. फिर लोड बैलेंसर सारे लोड को उठा के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बैकएंड में. तो वीएमएसएस ऐसे काम करता है. मतलब जो हमने वीएमएसएस किया था लास्ट टाइम, इट वाज विदाउट लोड बैलेंसर, बट एक्चुअल में बीएमएसएस के साथ में भी लोड बैलेंसर कंपनी में लगा होता है, क्योंकि अगर बीएमएसएस के साथ में लोड बैलेंसर नहीं लगाओगे तो वो क्वेरीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा. इट विल ऑलवेज गो टू वन मेंबर सर्वर ओनली. सो डिफरेंस यही है. VMSs creates the copy of server when there is load on one or two particular servers in the pool, but it is not going to distribute the queries to the backend servers. Load balancer will by default distribute the queries to the backend servers equally, and load balancer also ensures the high availability. VMSs को नहीं पता होता कि कोई सर्वर मेंबर, जो पूरा उसका सर्वर है जो उसके क्लस्टर में चल रहा है, अगर कोई सर्वर डाउन हो गया, VMSs डज नॉट नो अबाउट इट. बट लोड बैलेंसर को पता होता है कि चार सर्वर चल रहे हैं, चार में से एक डाउन हो गया है, तो इसको रिक्वेस्ट भेजनी ही नहीं है मुझे आगे से. दिस इज हाउ द VMSs एंड लोड बैलेंसर वर्क्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सर लेकिन वीएमएसएस में ट्रैफिक तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, जो सीपीयू हमने सेट किया, जैसे 80%, 70%. ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ ना वो. ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी हुआ. ट्रैफिक आया, किसी बंदे ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे साइट एक्सेस करनी है, VMSs इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता. वो रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर के पास जा सकती है उठ के. और हो सकता है कि 10 लोगों ने रिक्वेस्ट करी, मेरे पास 10 सर्वर है क्लस्टर में, बट वो 10 सर्वर पे इक्वली जाती नहीं है, वो एक ही सर्वर पे 10 रिक्वेस्ट भेज देगा. ऐसा भी होता है, बिकॉज देयर इज नो मैकेनिज्म. दैट इज वाई VMSs को लोड बैलेंसर के साथ यूज करना पड़ता है.
क्लियर? तो ओके सर। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है उसमें। उसमें ये होता है लोड आ रहा है एक सर्वर पे तो वो कॉपी बनाता है सर्वर्स की, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। और यहाँ पे लोड वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे लोड आने ही नहीं देगा ये। अगर लोड आ रहा है तो वो वैसे भी उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा है। अगर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है तो वीएमएसएस सेटअप कर दो लोड बैलेंसर के साथ, क्योंकि हमारे बैकएंड के सर्वर अगर कैपेबल नहीं है उस लोड को हैंडल करने के लिए तो उसकी कॉपीज बना देगा वो, तब फिर वो लोड और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। आ गया समझ में कि नहीं आया? नहीं मतलब मेन काम उसका कॉपीज बनाना है। मेन काम कॉपीज बनाना नहीं है, बीएमएसएस का मेन काम है हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करना। अगर एक सर्वर पे हार्डवेयर पे लोड आ रहा है उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो उसकी वो कॉपीज बना देता है ताकि बैकएंड में वो सर्वर डाउन ना हो जाए। और वीएमएसएस भी एक्चुअल में इंडिपेंडेंट यूज नहीं करती कंपनी, वो लोड बैलेंसर वहाँ पे भी लगता ही लगता है, लोड बैलेंसर लगता है। जब हम वीएमएसएस डिप्लॉय कर रहे थे तो यू माइट हैव नोटिस कि वहाँ पे लोड बैलेंसर का ऑप्शन था और मैंने उसको हटा दिया था। I told you that when we will start the load balancing practical, then I will discuss about that. तो लोड बैलेंसर आज हम कर रहे हैं, वीएमएसएस हम 1 मंथ पहले ही कर चुके हैं। क्लियर? तो यस। जब भी कंपनी में वीएमएसएस बनाओगे आप लोग, वो इंडिपेंडेंट कभी होगा ही नहीं, उसके साथ लोड बैलेंसर भी लगाया जाएगा साथ में। जैसे अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा वही सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वहाँ पे वीएमएसएस के लिए, मैं दिखा दूंगा अभी वो भी। ओके सर। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ इट। So practical implementation is easy. So what we have to do for this practical, I am going to create 2 servers in the backend. मैं 2 VMs बनाऊंगा अभी Azure के ऊपर। तो 2 VMs बनाऊंगा and that will be on Windows Server environment, and I will install the IIS role on both the servers. मैं दोनों में IIS का रोल इंस्टॉल करूंगा and I will configure 2 web pages on both the servers. मैं दोनों सर्वर्स के ऊपर वेब पेजेस कॉन्फ़िगर करूंगा लाइक वी डिड येस्टरडे। आफ्टर दैट आई विल सेटअप द लोड बैलेंसर। फिर मैं लोड बैलेंसर सेटअप करूंगा। आई विल कनेक्ट दैट लोड बैलेंसर विद द सर्वर्स एज ए बैकएंड। देन वी विल सी हाउ द लोड बैलेंसिंग हैपन। फिर इसके अंदर और भी कुछ प्रैक्टिकल्स देखने हैं हमें, जैसे नेट का प्रैक्टिकल देखना है, सो वी विल सी द नेट प्रैक्टिकल एज वेल। सो लेट्स सेटअप। let me first create 2 virtual machines in the Azure. So I will just go to the VM. So process will be simple. VM बनाना तो सबको पता ही है। I will not repeat it again. I will just quickly create 2 of the VMs. So one name will be web server -01. So if you want to keep it in the availability set, availability zone, you can. Or if you want to keep it in the VMSs, you can. I will make it independent. Then Windows Server. Here I will take 3.5 GB RAM and 1 core of CPU. That is okay for this practical. So for the NSG, we have to enable port number 80 and 443 as well, because I am going to make it web server. So web server के लिए 80 443 enable करना पड़ेगा हमें along with the RDP. Click on next. I will not make any changes here. Next. In the virtual network, I will just change the name of the VNet. So I will give the name VNet-01. Rest is fine. Then next, next, and review plus create. So let's wait for it to be created. Then I will spin up another VM as well. How the VMSs and load balancer works. I hope this is clear to you. सर लेकिन वीएमएसएस में ट्रैफिक तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, जो सीपीयू हमने सेट किया जैसे 80% 70%। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ ना, वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी हुआ। ट्रैफिक आया, किसी बंदे ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे साइट एक्सेस करनी है, वीएमएसएस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। वो रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर के पास जा सकती है उठ के। और हो सकता है कि 10 लोगों ने रिक्वेस्ट करी, मेरे पास 10 सर्वर है क्लस्टर में, बट वो
10 सर्वर पे इक्वली जाती नहीं है, वो एक ही सर्वर पे 10 रिक्वेस्ट भेज देगा, ऐसा भी होता है, बिकॉज देयर इज नो मैकेनिज्म। दैट इज वाई वीएमएसएस को लोड बैलेंसर के साथ यूज करना पड़ता है। क्लियर? तो ओके सर। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है उसमें। उसमें ये होता है लोड आ रहा है एक सर्वर पे तो वो कॉपी बनाता है सर्वर्स की, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। और यहाँ पे लोड वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे लोड आने ही नहीं देगा ये। अगर लोड आ रहा है तो वो वैसे भी उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा है। अगर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है तो वीएमएसएस सेटअप कर दो लोड बैलेंसर के साथ, क्योंकि हमारे बैकएंड के सर्वर अगर कैपेबल नहीं है उस लोड को हैंडल करने के लिए तो उसकी कॉपीज बना देगा वो, तब फिर वो लोड और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। आ गया समझ में कि नहीं आया? नहीं मतलब मेन काम उसका कॉपीज बनाना है। मेन काम कॉपीज बनाना नहीं है, बीएमएसएस का मेन काम है हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करना। अगर एक सर्वर पे हार्डवेयर पे लोड आ रहा है उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो उसकी वो कॉपीज बना देता है ताकि बैकएंड में वो सर्वर डाउन ना हो जाए। और वीएमएसएस भी एक्चुअल में इंडिपेंडेंट यूज नहीं करती कंपनी, वो लोड बैलेंसर वहाँ पे भी लगता ही लगता है, लोड बैलेंसर लगता है। जब हम वीएमएसएस डिप्लॉय कर रहे थे तो यू माइट हैव नोटिस कि वहाँ पे लोड बैलेंसर का ऑप्शन था और मैंने उसको हटा दिया था। I told you that when we will start the load balancing practical, then I will discuss about that. तो लोड बैलेंसर आज हम कर रहे हैं, वीएमएसएस हम 1 मंथ पहले ही कर चुके हैं। क्लियर? तो यस। जब भी कंपनी में वीएमएसएस बनाओगे आप लोग, वो इंडिपेंडेंट कभी होगा ही नहीं, उसके साथ लोड बैलेंसर भी लगाया जाएगा साथ में। जैसे अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा वही सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वहाँ पे वीएमएसएस के लिए, मैं दिखा दूंगा अभी वो भी। ओके सर। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ इट। So practical implementation is easy. Hmm, So what we have to do for this practical, I am going to create 2 servers in the backend. मैं 2 VMs बनाऊंगा अभी Azure के ऊपर। तो 2 VMs बनाऊंगा and that will be on Windows Server environment, and I will install the IIS role on both the servers. मैं दोनों में IIS का role install करूंगा and I will configure 2 web pages on both the servers. मैं दोनों servers के ऊपर web pages configure करूंगा like we did yesterday. आफ्टर दैट आई विल सेटअप द लोड बैलेंसर। फिर मैं लोड बैलेंसर सेटअप करूंगा। आई विल कनेक्ट दैट लोड बैलेंसर विद द सर्वर्स एज ए बैकएंड। देन वी विल सी हाउ द लोड बैलेंसिंग हैपन। फिर इसके अंदर और भी कुछ प्रैक्टिकल्स देखने हैं हमें, जैसे नेट का प्रैक्टिकल देखना है, सो वी विल सी द नेट प्रैक्टिकल एज वेल। सो लेट्स सेटअप। let me first create 2 virtual machines in the Azure. So I will just go to the VM. So process will be simple. VM बनाना तो सबको पता ही है। I will not repeat it again. I will just quickly create 2 of the VMs. So one name will be web server -01. So if you want to keep it in the availability set, availability zone, you can. Or if you want to keep it in the VMSs, you can. I will make it independent. Then Windows Server. Here I will take 3.5 GB RAM and 1 core of CPU. That is okay for this practical. So for the NSG, we have to enable port number 80 and 443 as well, because I am going to make it web server. So web server के लिए 80 443 enable करना पड़ेगा हमें along with the RDP. Click on next. I will not make any changes here. Next. In the virtual network, I will just change the name of the VNet. So I will give the name VNet-01. Rest is fine. Then next, next, and review plus create. So let's wait for it to be created. Then I will spin up another VM as well.
Okay, so this VM is created. Now let me set up another VM as well. So at least two VMs will be required for this practical in the company. Multiple VMs can be there in a cluster, but minimum two servers should be there. So I will be operating with two server minimum. ज़्यादा की हमें requirement नहीं है to understand the concept. So let's create another VM. So I will take the same resource group here. VM name I will give web server 02. Same region. Image will be Windows. Size is also fine. So here also I will enable HTTP and HTTPS because I want to make it as a web server. Next, next. This server should be the part of same VNet because Azure Load Balancer will only do the load balancing if the server belongs to the same network. So the member server should always be connected to the same VNet if we want to do the load balancing with the Azure Load Balancer. So VNet सबके same होने चाहिए. If they are sitting in a different VNet, Azure Load Balancer does not understand those servers. So you cannot add those servers with the Azure Load Balancer. So आप उन्हीं servers को load balancer में add कर सकते हो, belongs to the same VNet. So make sure the server that you create, it belongs to the same virtual network all the time. यहाँ पे VNet की dependency है. So next, then review plus create. So let's wait. So this server is also deployed. Now what I will do, so I will take the remote of both the servers and I will install the IIS role in both the servers. So I will make it web server. So let's take the remote of first. And I will also connect with second server. So once the servers are loaded, then we have to install the IIS from the server manager. So let's wait for it to load. So I will go to web server 01. This is my web server 01. And let's wait for the server manager to open. Otherwise, you can also open it manually, but let's wait for the automatic open because it will take some time to get refresh. So खुद से open भी कर दोगे, still the server will not give you the performance. So now it is refreshing. You can see the blue lines are going on. So now the refresh is done. We can see one more console got added here. We can just go to add roles and features.
next. And yesterday we discussed about this topic. So I will install the IIS here. Next, and install. Same thing I will do with another member server as well. So I will go to web server 02. This is my web server 02. And here as well, we need to install the IIS. So it is in the refresh state right now. So let's install it now. So I will just click on add roles and features. Next, next, then IIS, then again next, and install. So let's wait for the installation to get completed on both the servers. What we can do, we can now launch the web pages. So yesterday we discussed about it. What we can do, we can just open a notepad and we can simply run one of the code. So you can use this one. This is my web page number 1. So on web server 01, I will write this is my web page number 1 and I will save it in the initpub location. So save as, then go to C drive, initpub, www root, and here I will save it as default.html. All files save. Then I will move to another server, which is web server 02. Here also I will do the same thing. Here I will write one of the different web page. So h1. This is my web page number 2. Then close the heading. And I will save it in the same location. www root, and here I will give the name default.html. So I'm using two different sites on two different web servers. In the real company, on both the servers, same site will be running. Here I am using two different sites on two different servers. One is having this content, another one is having this content. But in the real company, it will be same site on both the servers. So why I'm using different one? Because I want to show you how the load balancing actually happens in the real scenario. Otherwise, I could have used the same site on both the servers as well. But real scenario में same site चल रही होगी because this is what we want to achieve.
If one server goes down, another server will be available. Equal load balancing will happen. If two of them are working fine, the load will be distributed equally. So that is why, just to show you the real result, I am using two different websites, but in the real scenario, it will be same. So remember that. Now the sites are configured. So what I will do, I will just check whether they are working or not. So I will take the public IP of web server 01. Then in the browser, I will just put default.html along with the public IP. So it should be accessible. See, the site from my server number 1 is accessible. Then I will go to web server 02, and from here also I will copy the public IP. Then slash, the name of site is default.html. So enter. So it is accessible now. So both the servers have the web pages configured. Web servers are properly working without any issues. Yes, Pooja. सर Yes, tell me. Yes. हमने दोनों जो नाम लिखे थे लाइक वो दोनों हमने सेम फाइल में सेव किए थे सेम नाम से हम्म default.html। हम्म तो हमने दोनों को सेम ही नाम दिया था ना दोनों फाइल्स को। हाँ, नाम सेम दिया था, बट उसके अंदर जो साइट कंटेंट है वो अलग अलग है। बट बट सर रियल हम जब सिनेरियो में साइट कंटेंट भी सेम रहेंगे। लेकिन सर अब जब मतलब फाइल ओपन करते वक्त पे सिंगल फाइल का नाम डबल डबल कैसे क्या ले सकता है लाइक रिप्लेस नहीं, वो डेस्टिनेशन आता है वो या फिर कुछ। वो अलग अलग सर्वर पे है ना। पहला सर्वर ओके ये ओके है, ओके। समझ गए। यस यस यस। वो अलग अलग सर्वर्स के ऊपर सेव है, इसलिए वो रिप्लेस डेस्टिनेशन नहीं आएगा। एक ही सर्वर पे दो वेबसाइट नहीं चल रही, दो अलग अलग सर्वर पे एक एक वेबसाइट चल रही है। यस सर गॉट इट गॉट इट। ओके, या सो नाउ द वेब सर्वर हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड, सो लेट्स सेट अप द लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर सेटअप करते हैं। यहाँ तक का काम तो बहुत इजी था। यू गाइस आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस वन। नाउ I will just go to the portal and I will search about load balancer. So once you will search for the load balancer, you can see the option is here. This is the symbol of the Azure Load Balancer. You can just click on this and it will get open. As I mentioned, in Azure, we have 4 load balancing services. We have Load Balancer, we have Traffic Manager, Front Door and CDN, and Application Gateway. So these 4 are the load balancing solutions in Azure. We are going to cover Traffic Manager, Load Balancer, and Application Gateway. We will not cover this topic. So these 3 load balancers we are going to cover. So let's first see the load balancer. So just click on the load balancer. Right now there is no load balancer, you can see. So Azure Load Balancer enables your application to be highly available and scalable. ये वही है जो मैं बता रहा था. It is in the highly technical language. तो वही सब चीजें बता रहा है. We can just click on create. If you want to create a new resource group, you can, otherwise choose the same. So I will choose the same. Then give the name to the load balancer. So I will give the name LB-01. The region of the load balancer, so it will be UK South, because my VMs are also there in the UK South region. If you will create the load balancer in a different region, you will not be able to connect your virtual machines from UK South region. So make sure the load balancer and the VM should be in the same region if you want to connect them. This is one of the limitation with the Azure Load Balancer. ये Azure Load Balancer की limitation है. So choose the region, then comes the SKU. SKU basically means stock keeping unit. So as we all know, we are creating it on the cloud, but in the real scenario, means in the Microsoft data center, this is actually one of the physical load balancer. Microsoft के data center में ये एक physical load balancer है actually. It's not a virtual load balancer. We are using it virtually through the cloud portal, but in real scenario, in the Microsoft data center, it is a physical load balancer. So it is asking that what kind of configuration you need. Configuration means SKU, stock keeping unit. So you have to choose from these 3 categories. One is standard. Standard is like when the traffic will come to the load balancer, it will distribute the traffic to the backend servers, means backend virtual machine. So it's a normal scenario. Gateway, which is another SKU.
So gateway is going to distribute the traffic to the network virtual appliances. Network virtual appliances in the sense, let's talk about a very big scenario. Very big scenario means, let's say we have a load balancer. This load balancer is in UK South. ये load balancer है UK South में. And companies have a lot of branches. So company has one branch in East US as well. So in the East US also they have one of the load balancer, because East US also have some portals running. They also have the branches in the Australia. So in the Australia as well, they have one of the load balancer. They also have one branch in India. So in India as well, they have a load balancer. Now we have 4 load balancing solutions for the same company in the different locations. And what we have done, I want to connect these 3 load balancers as a child to this UK South load balancer. So I want to make this load balancer as parent and these 3 load balancers as child. So I want to connect them. If I want to connect them, there is a option in Azure which is called Global Load Balancer. Global. So we have to create the Global Load Balancer SKU that time, and these other load balancers can be connected here. Now, what is the purpose of this? Let's suppose we have a user. That user is in India location. Or maybe forget about India. Let's suppose we have a user and that user is coming from Nepal. That user is sitting in the Nepal location. So what he wants to do, he wants to access the site which is running in this environment. So he will send the request to my load balancer. This is my main load balancer, my parent load balancer. So request will come to the parent. Now this load balancer is actually in the UK South. This user is coming from the Nepal area. So what this load balancer will do, load balancer will check that which load balancer will be feasible or nearest to the Nepal, who can serve this particular user, who can serve this particular client. मतलब मेरे मेंबर्स में कौन सा ऐसा लोड बैलेंसर है जो नेपाल के नियर बाय है. So this load balancer will dictate that this India load balancer, which is connected with me, it is near to the Nepal. So what this load balancer will do, it will redirect the query to the India load balancer now. Now the India load balancer will provide the web page to this particular user in the Nepal. This kind of model is called global load balancer. This is a global load balancer setup. Second kind of setup is regional. Regional basically means you have a branch in the UK South region, so you have deployed one load balancer in the UK South. Now the member servers are connected here. Any user from any part of the world, कोई भी user किसी भी part of the world से, the request will come to the load balancer front end. Load balancer will distribute the query to the back end. Now the thing is, if these users are coming from Nepal, ये तीनों user नेपाल के हैं, and they will send the request to the load balancer. My load balancer setup is in UK South. My servers are also there in the UK South. So there may be latency issues. UK के सर्वर से जाके आप पेज एक्सेस कर रहे हो नेपाल में, the portal, the website, whatever, there may be latency issues. Slowness आ सकती है. There can be performance issues. This can happen because of the network distance. So this kind of setup is called regional load balancer. In the regional load balancer, the load balancer is only limited to a particular region. अब service तो वो दे देगा, that is okay. This UK South load balancer will be able to serve the India, Nepal, or any user in the world. But there might be latency issues because of the long distance. But if we talk about the global load balancing situation, in the global load balancing situation, the main load balancer will transfer the request to the another load balancer which is nearby to the requester's location. तो वहां पे latency issue नहीं रहेगा फिर. That is a global setup. So in our curriculum, we are going to cover the regional load balancer. अभी जो हम setup देख रहे हैं वो actually regional load balancer का देख रहे हैं. So we are limited to a region only. Global load balancer is not part of our curriculum. It is in AJ 700 जो कि networking का core Azure का certification है. And it is also there in AJ 305, Microsoft Certified Solution Architect Expert. तो जो बहुत बड़े बड़े लेवल के आर्किटेक्चर डिजाइन होते हैं लाइक ग्लोबल लोड बैलेंसर, इट
is always there with AJ305. So we will only cover the regional load balancer practical, not global. But I have discussed the scenario with you, so you should have the understanding now. So when it comes to the SKU, the very first SKU is standard. Standard SKU काम करता है regional load balancing में. Means the traffic will come to the load balancer, it will be distributed to the backend server. That is a standard method. We need the gateway load balancer if we want to set up the virtual appliance. Virtual appliance in the sense if we want to set up the scenario of global load balancing solution, then we need the gateway load balancer. Another situation is you have a load balancer. अब देखना क्या क्या होता है सिक्योरिटी में. You have a load balancer, there is a backend pool of 3 servers. 3 सर्वर लगे हुए हैं. These 3 servers have the website running for the company. Now there is one more server in the company. मान लो एक firewall है. There is a firewall in the company. That firewall is also connected with the load balancer. And the security head of this company has said that whenever any request comes from outside, बाहर के किसी भी कोने से कोई भी request आती है, it should first come to the load balancer. From the load balancer, it should not be redirected to the backend server directly. मतलब load balancer से directly जाके load balancing नहीं होनी चाहिए. We first want to scan the request, क्योंकि हो सकता है हैकर ने कोई वायरस भेज दिया हो. So we first want to scan the request which is coming from the outside location. So whenever the request arrives at the load balancer, it should first redirect it to the firewall. In the firewall, we have set up a lot of phishing rules, scanning rules, validation rules. It will scan the incoming traffic. If it is fine, then it will be redirected back to the load balancer. Then the load balancer will distribute them to the backend. If it is legitimate, अगर उसमें कोई भी suspicious ट्रैफिक आ गया, कोई legitimate वायरस है, कोई हैकर का कुछ सिग्नल मिला, the firewall will discard that particular traffic from there itself. So if we want to set up this kind of architecture, then there is a gateway load balancer. So अगर कंपनी ने ऐसा बोल दिया है कि हमें सब कुछ स्कैन करना है, I want to send it to another server first, then it will be redirected to the members, then we have to set up the gateway. तब gateway बनता है. So virtual appliance can be anything. It can be firewall, it can be any antivirus server. मान लो firewall नहीं है, मान लो कोई antivirus का server बना रखा है हमने. Every request should go to this server first. From here it will be scanned. If it is fine, then it will be redirected back to the load balancer. Then the load balancer will distribute it to the backend. So that is called virtual appliance. So if you don't want to send the traffic directly to the backend servers, you want to send it to some other servers or some other network device for the scanning purpose or for the security purpose, you can always use the virtual appliance. So for that, we have to choose the gateway SKU. Another SKU is basic. So basic was the first type of load balancer that was used when the Azure came into the market. जब सबसे पहले Azure मार्केट में आया था, उस टाइम से लेके आज तक बेसिक का लोड बैलेंसर यूज हो रहा था. But nowadays, no company uses the basic load balancer, and Microsoft has mentioned that we will retire this service by 31st of March 2025. So you have only 15 days left to see this basic service. 15 दिनों में ये सर्विस यहाँ से हटा दी जाएगी. Even in the official document also, if you will go what is Azure Load Balancer, here also the update has been given. So Microsoft के official documents में हमेशा ही update आ जाती है. So here you can see important update on September 30, 2025. Basic load balancer will be retired. इन्होंने यहाँ पे ये लिख दिया है, but in the Azure portal it is showing that the basic SKU will be retired on 31st March 2025. So what is the meaning of this? इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे अलग डेट है, यहाँ पे अलग डेट है. So basically the meaning of this is from the portal it will be removed on 31st of March, क्योंकि बहुत से लोग अभी ये बोलेंगे कि ये तो गलत रिपोर्ट है. So on 31st of March it will be removed from the portal. पोर्टल से हट जाएगा. If your company is still using the basic load balancing solution, you can manage it from the PowerShell and Azure CLI. मतलब ये जो ये वाला ऑप्शन है ना, Azure CLI and PowerShell, अगर यूज कर रही है तो उसके थ्रू यूज कर पाओगे, बट फ्रॉम द पोर्टल इट विल गेट रिमूव्ड. पूरे तरीके से बिल्कुल जब बंद होगा, you will not be able to use the PowerShell, you will not be able to use it through the Azure CLI, and you will not be able to use it from the portal.
it will be after 30th of September. तो 30 सितंबर के बाद ना तो आप इसको CLI से मैनेज कर पाओगे, ना PowerShell से, ना पोर्टल से. Until 31st of March, it will be removed from the portal only. But you would be able to manage it from the PowerShell and from the Azure CLI. So this is the meaning of these two different dates. ये इसका मतलब है. तो इसको तो वैसे भी कोई यूज नहीं करता, सो नेवर यूज इट. कोई फायदा नहीं है, हटने भी वाला है. स्टैंडर्ड विल बी यूज्ड फॉर अस. हम लोग स्टैंडर्ड यूज करेंगे, नॉट गेटवे. गेटवे अगेन, it is one of the global load balancing solutions, so not part of our curriculum. So just choose the standard. There are two types of load balancer, public and internal. दो तरीके के load balancer होते हैं, public and internal. So I will discuss about the difference after some time. For now, let's choose the public only. अभी आप public ही choose करोगे. Just give me 1 second. So we will be choosing the public only, not internal. There is a difference between public and internal that I will discuss after 10 to 15 minutes. तब मैं बताऊंगा ये. So for now, choose the public. In the tier, we have to choose the regional tier, not global. हम regional tier choose करेंगे, not global. So global is the part of AJ 305. And one interesting thing is, if you go to the basic, you can only use the regional load balancer, not global. So basic में regional ही चलता था, global नहीं चलता था. And gateway में तो वैसे भी you have to set up a different kind of appliance, then it will be there. So internal में gateway आता है, देखो. You have to choose the internal SKU for the load balancer. So ये सब चीजें है. बाकी for now we will be using the public load balancer with the standard SKU, and it will be regional load balancer, not global. Now we have to click on next. Here we need to add one of the front end IP. So as I told you, load balancer will be connected to the internet to handle the incoming traffic. So there will be one of the public IP which will be connected on the load balancer, and that public IP is called front end IP. So you have to add a public IP here. You can just click on add a front end IP, and you can give the name to the public IP here. It will automatically create a public IP. So just give the name. I will give front end IP FIP01. And in the public IP address, if you have the free public IP, you can select it from the drop down. Right now, I don't have any free public IP. This is connected with web server 01. This public IP is connected with web server 02. So I don't have any free public IP, so I can create a new public IP. If you have free, you can select it from the drop down. So I will create a new. I will give the name PIP-01 for LB. मैंने ये लिख दिया इसका नाम. रेस्ट ऑफ द थिंग वी ऑलरेडी नो, ये सब पता ही है हमें. ये स्टैंडर्ड रीजनल वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. सो जस्ट सेव. वी आर नॉट यूजिंग एनी गेटवे लोड बैलेंसर. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक एज आई टोल्ड यू. सो क्लिक ऑन सेव. नाउ द फ्रंट एंड आईपी विल बी क्रिएटेड. इस नाम से एक पब्लिक आईपी बनेगा, PIP-01 फॉर लोड बैलेंसर टू बी क्रिएटेड. मतलब डिप्लॉय होने के बाद क्रिएट होगा. क्लिक ऑन नेक्स्ट. Now we need to add the backend pool. Backend pool means servers which is going to get load balanced. जिन सर्वर्स पे आप लोड बैलेंसिंग करना चाहते हो उनको आप यहाँ पे ऐड करोगे, ताकि लोड बैलेंसर जब भी क्वेरीज को आए तो वो उनको उन सर्वर्स के ऊपर ऑटोमेटिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करे. सो यू हैव टू ऐड द बैकएंड सर्वर्स फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड through the load balancer. So we have two servers that I am going to add in the backend pool. So just click on add a backend pool. Give the name, give any name. So I will give BP-01, which is backend pool 01. In which network, in which VNet the servers are connected. That is why I was telling you that the server should be the part of same VNet. So here let's see the VNet where both the servers are connected. So you can just go to the VNet. And you can see I have only one VNet, VNet-01. And if I click on this, under the connected devices, I can see two servers are connected. So my VM-01, my web server 01 and web server 2, both are connected with VNet-01. So I need to add this virtual network over here. So just select the drop down, and you can see your VNet is coming, VNet-01. It is the part of POP resource group. Just choose. Once you will select it, so now you can add your servers. So you can just click on add,
and you will see these two servers are the part of VNet 01, web server 01, web server 02, and you can see their private IPs as well. Load balancer in Azure does not understand the public IPs of the server, because in the real scenario there is no public IP configured on the servers. So it will only reflect the private IPs of the server, which is 10.0.0.4, 10.0.0.5. तो पब्लिक आईपी नहीं दिखाता और होता भी नहीं है रियल सिनेरियो में. आई विल ऑल्सो रिमूव द पब्लिक आईपी आफ्टर 10 to 15 minutes from these two servers. I want to show you something. So just check both the boxes. I want to add these two servers in the load balancing solution, web server 01, web server 02. Then add. Now both the servers got added. In future, if I want to add more servers, that is also possible. We can do that. If I want to remove any server after the creation, that is also possible. We can do that. And this will be your responsibility in the company. The ticket will come to you whenever you will create a new server in the company. It has to be added into the load balancing backend. So you should know how to add, you should know how to remove. So both the servers got added now. Now click on save. So my backend pool is also ready. My front end IP is also ready. Now we have to set up the rules. So if you click on next, here we can set up the rules. There is one NAT topic that I will discuss after some time, and here you can set up the rules. If you don't want to do it right now, you can do this later on as well. So I will do this later on. I will not make any changes right now. Click on next. There is one more type of rule which is called outbound. So this also we will discuss after some time. Click on next. If you want to add the tags, you can, otherwise leave it. Click next and now create. So after the creation, now I will add the rules and the health probe. So just click on create and let's wait. If you click on this, you will see the details. So under the overview, you can see the load balancer is connected to the backend pool 02 and it contains two virtual machines right now. If you click on this, you will see the name of these two virtual machines, web server 02, web server 01. If you want to add more virtual machines, you can do it right now. Both the virtual machines are in running condition. दोनों के दोनों अभी रनिंग कंडीशन में है and there is no rule configured. It is not part of any availability zone. Now, again, let's go to the overview of the load balancer. So there is no health probe configured right now. There is no rule configured right now. There is no inbound rule. There is no outbound rule. Nothing. SKU is standard right now. As standard लिया था हमने. And on the left side, if you go to the settings, you can see the components. So front end IP is the component of the load balancer, backend pool is the component, health probe is the component, and load balancing rules is the component. So these four components are very, very important in the load balancer. If you will miss any one of these, you will not be able to do the load balancing. So in interview, it will be asked, what are the components of the load balancer? So front-end IP, back-end pool, load balancing rules, and health probe. These are the important components of the load balancer. These two are some different settings. These are not related to the load balancing. ये कुछ अलग चीज है that I will discuss after some time. But for the load balancing, these four components are mandatory. So you have to remember these names to crack the interviews. If you go to the front-end IP, you will now see there is a public IP. फ्रॉम बी क्लास, ये एक पब्लिक आईपी है. इट्स नॉट ए प्राइवेट आईपी. 172 देख के मत सोचना कि प्राइवेट आईपी है, बिकॉज इन द सेकेंड ऑक्टेट इट इज 167. 16 नहीं है, 167 है. सो इट इज अ पब्लिक आईपी and with this public IP the load balancer is actually connected to the internet. But अभी कोई rule नहीं है इस पे. देखो, we have the backend pool also. We have two servers connected. If I want to add more, I can do that. If I want to remove something, I can also do that.
there is health prop. So right now there is no health prop configured. There is load balancing rule, but there is no rule right now. तो ये दो सेक्शन अभी नहीं हो रखे हैं. So front end is done, back end is done. Now let's set up the health prop. अब हम health prop setup करते हैं सबसे पहले. Health prop is basically used to check the health of all the backend connected virtual machines. It will send the signal to the load balancer time to time to check whether the servers are healthy or not. If one of the server goes down, it will not send the response to the signal and the server will be declared as unhealthy. So after that, load balancer will not send the signal to that particular server. Traffic will not be routed to that particular server. तो उस सर्वर को ट्रैफिक और सिग्नल नहीं भेजा जाएगा उसके बाद. Once it comes online again, then the traffic will be resent to that particular server. So that is the job of health prop. So it checks the health of the underlying virtual machines connected with the load balancer. ये जो VMs connected है load balancer पे उसकी health को check करने के लिए होता है. And to check the health, it uses two protocols, TCP and UDP. इन दो protocols का ये use करता है health को check करने के लिए. If you remember, I told you load balancer works on layer 4 of the OSI model, which is transport layer. So transport layer, अगर आपने OSI model पढ़ा होगा अपनी लाइफ में कभी in the basics, so वहाँ पे सुना होगा in the transport layer of OSI model, two protocol works, TCP and UDP, transmission control protocol and user datagram protocol. So because these two protocols are working in the transport layer, that is the reason the load balancer also operates on the transport layer, layer 4. And that is the reason health probe will also use the TCP and UDP protocol to check the health of all the backend servers. So in interview, if someone asks you, वैसे तो पूछेगा नहीं, because this is the high level question. This is the part of again architecture expert, but there are some interviewers who will ask. So you know the protocol will be TCP and UDP. So let's set up the health probe. Just click on it. Give the name to the health probe. So I will give HP-01. Protocol for the health check, you can decide TCP, HTTP, HTTPS. So by default, it will be TCP because under the TCP, you can just choose HTTP and HTTPS both. TCP के अंडर में दोनों आ जाते हैं. Otherwise, you can specify which protocol you want to use for checking the health. Generally, what happens, the website that I have run here, these are in the HTTP. कल मैंने दिखाया भी था, this is not HTTPS because we are not using any SSL certificate. So the website which is operating on my servers, these are using the HTTP. So if you want, you can choose the HTTP as well. But there are companies who have the mixed environment. Companies में mixed environments होते हैं. The website which is external, it will always be HTTPS in the companies. जो external websites होती है, just like youtube.com, the web application, Gmail, flipkart.com, Amazon, these kind of sites will always be in HTTPS. And some internal portals, some internal sites will be in HTTP because it is not required to have the SSL certificate क्योंकि उसके पैसे लगते हैं. So in some companies, there will be mixed kind of environment. HTTP will also be there. HTTPS sites will also be there. So in that condition, we can choose TCP. TCP will include both the sites. But specifically, if you don't have that kind of setup, if you only have HTTP sites, so you can choose HTTP and you can define the timing. Here I will choose TCP because in the real scenario, TCP is used. TCP will cover both. कोई सी भी साइट हो HTTP, HTTPS, it will cover both. So I will choose TCP. Port number will be 80 for the TCP as well. After how many seconds the load balancer is going to send the health prop signal, that you can decide here. So minimum is 5 seconds. 5 second minimum डालना पड़ेगा. If you will put 1, so it will tell you that minimum is 5 seconds, maximum can be this one. अब ये मिनट में कितना होता है, you need to convert. I don't know, convert कर भी लेते हैं. Wait. Seconds in minute. Because minute वाला जल्दी याद रहेगा. So यार ये क्या कैलकुलेटर आ गया. Wait. Amount is this. Seconds to minute, calculate. So it will be 35 minutes approx. So 35 minutes तक का maximum threshold आप लगा सकते हो. Minimum will be 5 seconds. After every 5 seconds, it is going to send the health signal to all the connected member backend servers. If one of the server will not respond,
the load balancer will declare that as unhealthy, and the traffic will not be forwarded to that particular server again. So you can decide the timings accordingly. Minimum is 5 seconds, maximum is around 35 minutes. तो याद रखना ये रेंज। वैसे इंटरव्यूअर को भी याद नहीं होती, बट कोई टेक्निकल रियल वाला इंटरव्यू आ गया तो दे रिमेंबर दिस काइंड ऑफ रेंजेस, लाइक मी, आई रिमेंबर दिस। So save. Now the rule has been created. ये इसकी डेफिनेशन भी बता रहा है, देखो। If the health pro fails to give the connection request, then no request will be forwarded. तो ये उसकी डेफिनेशन थी। So the rule is created here. Now let's set up the load balancing rule. तो हमारे पास front end भी है, we have the back end also, we have the health probe also. Now it's the time to set up the load balancing rule. This is the actual main component. इसके बिना कोई load balancing नहीं होती। Let me draw the diagram again. This is my load balancer. This is my backend. So in my backend, we have two servers connected. Health probe is also configured on the load balancer. If any user will send the request to the load balancer, front end IP भी है हमारे पास, back end pool भी है, health probe भी, everything is there. But how the load balancer will distribute the query to the back end on the basis of rules. So rules plays very important role when it comes to the redirection of the queries. If there is no rule, there will be no load balancing. So this is the actual main component in the load balancing solution. कोई पूछता है which one is the main component out of these four? So rules are the main component out of these four. So now let's go to the load balancing rule and let's create the one. So I will just click on add. यहाँ पे भी नाम देना है. So give the name. I will give the name as LB rule -01. कुछ भी नाम दे दो. I will give LB rule -01. We are using IP version 4 in our environment, so we will be choosing IP version 4. What is your front end IP of the load balancer? किस IP पे request आएगी? So just click on the drop down, and this is the IP of my load balancer front end. Just choose it. What is the name of your backend pool? अगर इस IP पे कोई request आती है load balancer पे, so where it should be transferred, where the load balancing should happen. So it should happen on my BP01 backend pool, जिसमें दो servers connected है. So just choose it. Which protocol you are using? So TCP, because TCP is very secure protocol. UDP is not. TCP always makes the connection. ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी जिंदगी में बेसिक्स में during the OSI model. So I will not describe the detail. Port. Port means, this is important. See, I have a load balancer. अब ध्यान से देखना. I have a load balancer. Two servers are connected here. Here the websites are running. यहाँ पे भी वेबसाइट चल रही है. Here also we have the website running. ये यूजर आया, इसने बोला मेरे को वेबसाइट एक्सेस करनी है. He has entered the address www.flipkart.com. रिक्वेस्ट कहाँ पे आई? इसके पास. रिक्वेस्ट आने के बाद आफ्टर द रिक्वेस्ट अराइव्स एट द लोड बैलेंसर चेक करेगा कि भाई रूल के हिसाब से कौन से सर्वर को भेजू. सो लोड बैलेंसर शुड नो दैट विच काइंड ऑफ रिक्वेस्ट इट इज. ये किस टाइप की रिक्वेस्ट है उसको पता होनी चाहिए. यूजर किस टाइप की रिक्वेस्ट भेज सकता है? यूजर कैन सेंड द रिक्वेस्ट टू आरडीपी. वो रिमोट लेने की रिक्वेस्ट भी तो भेज सकता है. तो रिमोट की रिक्वेस्ट हैंडल करना इसका काम थोड़ी है. दिस इज नॉट द जॉब ऑफ लोड बैलेंसर. एंड फॉर रिमोट द प्रोटोकॉल नंबर इज 3389. इफ इट इज लिनक्स, it can be SSH request, it can come on port number 22. तो यूजर तो कुछ भी भेज सकता है. एंड लोड बैलेंसर इज नॉट meant to handle the remote request, it is only meant to handle the request of the web portals, websites. So it can only handle either HTTP or HTTPS. या तो HTTP की रिक्वेस्ट या तो HTTPS साइट की रिक्वेस्ट हैंडल करेगा. नाउ लोड बैलेंसर के रूल में हमें डिफाइन करना पड़ेगा दैट इफ एनी यूजर वांट्स टू एक्सेस द वेबसाइट और एनी पोर्टल. तो सबसे पहले तो ये कि मेरी वेबसाइट और पोर्टल कौन से पोर्ट पे चल रही है. बिकॉज आई एम यूजिंग HTTP वेबसाइट्स ओनली, सो इट मींस इट इज ऑन पोर्ट नंबर 80. अगर मेरी HTTPS की साइट होती तो इट विल बी 443. सो दैट पोर्ट आई हैव टू डिफाइन हियर दैट इफ एनी यूजर वांट्स टू एक्सेस एनी वेबसाइट, तो उसकी रिक्वेस्ट अगर पोर्ट नंबर 80 के थ्रू आती है, क्योंकि वेबसाइट की रिक्वेस्ट कहां से आएगी? या तो 80 या तो 443. आइदर इट विल कम थ्रू HTTP और इट विल गो वाया 443. So because my environment says that we have port number 80 enabled,
HTTP की साइट है मेरे सर्वर्स के ऊपर, सो रिक्वेस्ट विल अराइव एट पोर्ट नंबर 80। सो वही चीज मेरे को यहाँ पे डिफाइन करनी है। इफ द रिक्वेस्ट कम्स ऑन पोर्ट नंबर 80 ऑफ द लोड बैलेंसर, देन ओनली इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द बैकएंड सर्वर्स। इफ इट इज फॉर डिफरेंट सर्विस, अगर बंदा बोलता है मेरे को RDP चाहिए, पोर्ट नंबर 3389 की रिक्वेस्ट है, इट शुड नॉट कम टू द लोड बैलेंसर। दिस इज द पर्पस ऑफ रूल। So I will define that incoming traffic should come from port number 80। यूजर की रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 80 पे अगर आ रही है तो उसको वेबसाइट मिलनी चाहिए। अगर 80 पे रिक्वेस्ट करता है तो कहाँ जाना चाहिए? मतलब यूजर ने क्या करा, यूजर ने सेंड करी है रिक्वेस्ट दैट आई वांट टू एक्सेस द वेबसाइट, सो ही हैज मेड वन ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट। क्योंकि वेबसाइट एक्सेस करने के लिए या तो HTTP या तो HTTPS काम करेगा। So he has made one of the HTTP request or HTTPS request from port number 80 or 443, या तो 80 पे या तो 443 पे। In our scenario it is through 80 because we are using HTTP site. If it is HTTPS it will be 443 here, ये याद रखना। If the request is coming from the user via port number 80, where should it go? मतलब अगर लोड बैलेंसर पे किसी ने रिक्वेस्ट भेज दी है पोर्ट नंबर 80 पे HTTP के थ्रू कि मुझे साइट चाहिए, तो मेरे बैकएंड पे 2 सर्वर्स है, आई हैव 2 सर्वर्स कनेक्टेड इन माय बैकएंड, वेयर इट शुड गो, कहाँ जाना चाहिए? तो ये जाना भी सर्वर के उन सर्वर्स पे चाहिए जिस पे वेब सर्वर्स कॉन्फ़िगर्ड हो। इट शुड गो टू द सर्वर्स वेयर द वेब सर्विसेज आर इनेबल, मींस IIS। तो मेरी साइट्स किसके ऊपर चल रही है? इन 2 सर्वर्स के ऊपर। सो इट शुड ऑल्सो मूव टू द 80 पोर्ट। मतलब अगर किसी ने HTTP की साइट मांगी है तो HTTP के सर्वर पे जाना चाहिए विच इज ऑन पोर्ट नंबर 80। सो इन बोथ द कॉलम्स यू विल एंटर 80। अगर HTTPS साइट होती सो इन बोथ द कॉलम्स यू हैव टू एंटर 443 443। यस पूजा? तो ये पोर्ट नंबर 80 का जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक से नहीं समझ रहा। मतलब यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उसको कैसे पता कि उसने कौन से पोर्ट से भेजी है? मतलब वो तो सिंपली भेजेगा ना रिक्वेस्ट। यूजर को पता नहीं करना। जब मैं कोई वेबसाइट एक्सेस करता हूँ, मैं कोई भी हाँ। वर्ल्ड में वेबसाइट एक्सेस करूंगा, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और मैं एड्रेस टाइप करूंगा, राइट? यस। अगर मैंने google.com टाइप किया यहाँ पे, ये देखो, इफ आई विल टाइप google.co.in या google.com जो भी है, मेरे को नहीं पता किस पोर्ट पे गई है, बट ये खुल किस में रही है? HTTPS में खुल रही है ना। इट मीन्स यस। इट इज गेटिंग रिडायरेक्टेड ऑन पोर्ट नंबर 443, क्योंकि ये HTTPS की सिक्योर साइट है। अगर कोई अनसिक्योर साइट में ओपन कर लूँ, इट विल ओपन इन HTTP। वो मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि HTTP में खुलती है HTTPS में खुलती है, बिकॉज आई एम टेक्निकल सो आई नो। बट द पीपल हु आर नॉट टेक्निकल, उसको क्या पता, वो तो बस खोल के बैठ जाएगा। बट बैकएंड में वही क्या तो। हो रहा है? द सिक्योर साइट्स विल ऑलवेज ओपन ऑन HTTPS। अनसिक्योर साइट्स मीन्स, अनसिक्योर तो नहीं कहेंगे हम उसको, द साइट विच इज नॉट यूजिंग एनी SSL सर्टिफिकेट, दे ऑलवेज ओपन इन HTTP। सो अगर यूजर ने किसी URL को डाला है, किसी साइट के URL को डाला है, हमें नहीं पता वो 80 से जा रहा है 443 से जा रहा है, बट जब उसकी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर तक पहुंचेगी, मतलब ये जो गूगल की रिक्वेस्ट है, इफ इट विल गो टू द गूगल लोड बैलेंसर, दैट टाइम द लोड बैलेंसर विल डिटेक्ट कि यार ये जो गूगल है मेरे बैकएंड पे, ये मैंने 443 में चला रखा है। सो इनकमिंग रिक्वेस्ट विल बी ऑन पोर्ट नंबर 443। अब किसी ने बोला मुझे google.com चाहिए, उसकी रिक्वेस्ट 443 पे लोड बैलेंसर पे आ गई। नाउ द गूगल लोड बैलेंसर विल रीडायरेक्टेड टू द बैकएंड सर्वर, जो कि उसको गूगल का पेज दे सकता है। मतलब मैंने गूगल मांगा तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाएगी जिस सर्वर पे गूगल अवेलेबल होगा, और वो भी किस पे होगा? 443 पे, क्योंकि google.com इज वन ऑफ द साइट विच इज यूजिंग SSL सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जो सर्वर्स है, उन सर्वर्स के ऊपर भी HTTPS में ही मैंने गूगल कॉन्फ़िगर कर रखा है। सो हमें नहीं पता होता किस पोर्ट पे है, बट लोड बैलेंसर डिटेक्ट कर लेगा इनकमिंग ट्रैफिक किस पोर्ट से आ रहा है। क्लियर? यस सर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सर बोलो। सर आपने ये 80 वहां पे सिलेक्ट किया है, तो ये तो सर अनसिक्योर हो गया। कोई भी व्यक्ति अगर इसको एक्सेस करेगा तो अनसिक्योर में ही तो ओपन होगा ना 80 सर। 80 का मतलब अनसिक्योर नहीं होता है एक्चुअली। 80 का मतलब ये होता है HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, वो तुम्हें बेवकूफ बनाया जिसने भी। अनसिक्योर सिक्योर नहीं होता वो ये होता है, अगर कोई साइट HTTP में खुलती है, इट मीन्स दैट साइट डज नॉट यूज द SSL सर्टिफिकेट। मतलब वो कमजोर है, इट कैन बी हैक्ड वेरी इजिली। मतलब बहुत जल्दी हैक हो सकती है क्योंकि वो सिक्योर टनल यूज नहीं करता। अब जो कंपनी है, इन कंपनी, देयर आर सम साइट्स विच इज इंटरनल टू द कंपनी ओनली।
जैसे कुछ पोर्टल्स होते हैं कंपनी के जो सिर्फ कंपनी के अंडर में खुलते हैं। अब अगर आपको HTTPS में कोई साइट ओपन करनी है, यू नीड SSL सर्टिफिकेट इन दैट केस, और SSL सर्टिफिकेट के पैसे देने पड़ते हैं। मतलब HTTPS में साइट ओपन करने के पैसे लगते हैं। सो द इंटरनल साइट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी ने ऑलरेडी नेटवर्क पे पैसा लगा रखा है, दे हैव द सिक्योरिटी टीम, दे कैन सिक्योर। हैकिंग कब होती है? व्हेन वी आर गोइंग एक्सटर्नली। जो साइट्स आपकी सबके लिए ओपन है इंटरनेट पे, वहां पे हैकिंग होने के चांस होते हैं। बट द साइट विच इज इंटरनल टू द कंपनी, वहां पे कौन हैकिंग करेगा? हैकिंग इंटरनेट के थ्रू होती है हमेशा। सो द पोर्टल विच इज इंटरनल टू द कंपनी, कंपनी विल ऑपरेट इट ऑन द HTTP मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि फिर HTTPS के पैसे लगेंगे। बट द पोर्टल और द वेबसाइट विच इज एक्सटर्नल फॉर द इंटरनेट, जो सब लोग एक्सेस कर रहे हैं किसी ना किसी कोने से, that will be in HTTPS, क्योंकि उसके लिए वो पैसे देंगे just to maintain the security. So we cannot say that HTTP is unsecure. HTTP unsecure नहीं है, HTTP SSL certificate use नहीं करता, so it is weak. It is very prone to hacking. उसको hack करना easy है. That is why if we are running any external website, so it will always be in HTTPS. Now coming to your question, तुमने बोला कि हमारी साइट तो अनसिक्योर है। इट्स नॉट अनसिक्योर, बट यस इट इज वीक। और HTTPS के लिए फिर हमें HTTPS का SSL सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ेगा फॉर एवरीवन। अगर तुम चाहते हो कि मैं HTTPS की साइट चलाऊं, सो आई हैव टू परचेज द SSL सर्टिफिकेट, एंड फॉर द प्रैक्टिकल यू गाइस विल आल्सो हैव टू परचेज इट। तो उसका कोई सेंस नहीं है। एंड फॉर SSL सर्टिफिकेट परचेज इट विल कॉस्ट अस अराउंड 1800 to 2000 रुपीज, इवन मोर देन दैट। तो इतना पैसा लग जाता है HTTPS, प्लस डोमेन भी खरीदना पड़ेगा उसके साथ साथ फिर। सो डोमेन का भी प्राइस अलग। सो इन टोटल इट विल बी अराउंड 3000 to 4000 रुपीज ऑफ केम। सो उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। इन कंपनी इफ इट इज HTTPS, तो आप यहाँ पे 443 डाल देना। अगर वो इंटरनल पोर्टल्स है, इफ दे आर ऑपरेटिंग ऑन HTTP, आप यहाँ पे 80 डाल देना। ये याद रखना बस, इससे समझ में आ जाएगा। So HTTP is not unsecure. HTTP is connectionless. It can be hacked very easily. अभी मैं आपको कुछ साइट्स के एग्जांपल भी दे सकता था, बट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन द क्लास, सो आई कैन नॉट गिव दैट काइंड ऑफ एग्जांपल्स। बट आप लोग समझ सकते हो कि नॉर्मल साइट्स जो HTTP में ओपन हो रही है, दैट इज वीक, सो दैट कैन बी हैक्ड वेरी इजिली। जो HTTPS में ओपन हो रही है, दैट इज मोर सिक्योर देन HTTP, तो उनको हैक किया जा सकता है बट नॉट वेरी इजिली, क्योंकि उस पर SSL सर्टिफिकेट्स काम कर रहे हैं। तो ये मत बोल देना कि मतलब अनसिक्योर होती है। फिर वो एग्जांपल उठाएगा कि तुम्हारे अटेंडेंस पोर्टल तो इंटरनली HTTP में चलते हैं, देन अनसिक्योर नहीं होती। इट इज वीक इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। सो इनकमिंग पोर्ट विल बी 80, कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर HTTP साइट्स की आ रही है, इट शुड कम ऑन पोर्ट नंबर 80, एंड बैकएंड विल ऑल्सो बी 80। मतलब मेंबर सर्वर्स के ऊपर भी 80 पे जाएगी। अगर HTTPS की साइट है, सो ऑन बोथ द बेस यू हैव टू एंटर 443 देन you have to choose the health probe. So we already have the health probe, we can just select the drop down and we can choose our health probe HP-01। ये यहाँ पे आ गया। There is one option, session persistence. Session persistence is actually not very important, but let me tell you what is this. So when there is a load balancer, I have, let's say, two backend pools in the backend. This is my user. When he will send the request to the load balancer, first time this server was free, so load balancer has sent the query to this particular server. ये सर्वर फ्री था, तो लोड बैलेंसर ने इसको उठा के क्वेरी भेज दी, एंड दिस सर्वर हैज गिवन द पेज टू द यूजर। इसने उसको वेबसाइट दे दी। नेक्स्ट टाइम व्हेन द सेम यूजर विल कम अगेन, नेक्स्ट टाइम मान लो आज से 2 दिन बाद 3 दिन बाद, when the same user will come again and he will type the same address again that I want to access this website, request will come to the load balancer. If you will enable the session persistence is going to keep the history of the users who have accessed the web pages. मतलब वो हिस्ट्री मेंटेन करेगा लोड बैलेंसर, कि भाई इस बंदे ने 2 दिन पहले भी एक्सेस किया था। 2 days back this user has accessed my page. After 2 days this user is again coming to access the page, so load balancer will check that in the history, and 2 days back I have redirected the request to this particular server. मैंने इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी थी, आज भी इसी को भेज देता हूँ। That is the meaning of session persistence. So if you will enable it, if the histories are there, so if same user is making the request to the load balancer will always forward it to the
same backend server all the time. That is called session persistence. Now you guys will say, some intelligent people will say that what is the need of session persistence? देयर इज नो लोड बैलेंसिंग देन, फिर लोड बैलेंसिंग का क्यों हुई? मान लो आज के दिन 10 यूजर्स ने मेरे लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट करी फर्स्ट टाइम, और उन 10 यूजर्स की रिक्वेस्ट सेम सर्वर पे चली गई थी, मान लो फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट टाइम जब वो 10 यूजर फिर से आएंगे तो वो तो फिर से इनको उठा के भेज देगा, एंड दैट टाइम इफ दिस सर्वर इज बिजी, मान लो ये सर्वर ऑलरेडी बिजी है, आप उस पर और लोड डाल रहे हो, बल्कि आपके पास अलग से कोई सर्वर है विच इज फ्री, but because of session persistence you are putting more load on the same server. Then what is the load balancing? Where is the load balancing? So in the session persistence this is actually used in the audit purpose. ये audit purpose में use होता है. There will be people, मतलब कुछ ऐसी कंपनीज आएगी मार्केट में, मान लो चाइना का ले लो एग्जांपल, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना, चाइना वालों का ही लेते हैं ऐसे एग्जांपल। सो लेट्स से देयर इज अ चाइनीज क्लाइंट, एक चाइनीज क्लाइंट आया, ही हैज अ लैपटॉप, उस पर एक पब्लिक आईपी चल रही है, मतलब उसका अपना ऑफिशियल लैपटॉप है, देयर इज अ पब्लिक आईपी। चाइना वाले दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर लॉज एंड रेगुलेशंस। सो आई हैव ए लोड बैलेंसर इन द यूके साउथ में एक लोड बैलेंसर चल रहा है, दिस यूजर इज सिटिंग इन द चाइना, ये चाइनीज है, इसके पीछे लोड बैलेंसर के पीछे देयर आर 2 सर्वर्स कनेक्टेड इन द बैकएंड। इस बंदे ने बोल दिया, चाइना वाले ने, दैट whenever I will send the request to the load balancer to access my website, it should always go to this server, because on this server we have done some security changes. हमने इसमें कुछ security changes कर रखे हैं as per our China law, अपने चाइना के लॉ के हिसाब से. So I want that always whenever I want to access the website, it should go to the load balancer, and from the load balancer it should always move to this particular server, not here. क्योंकि मैंने अपनी स्पेशल चाइनीज सिक्योरिटी इस पे लगा रखी है. दिस इज वन ऑफ द कंप्लायंस, दिस इज वन ऑफ द लीगल रेगुलेशन. सो फॉर दैट पर्पस वी नीड द सेशन परसिस्टेंस. तब चाहिए होता है कि बंदे ने सामने से बोल दिया कि मैं तो किसी और पे चाहता ही नहीं जाना, आई विल ऑलवेज एक्सेस माई वेबसाइट फ्रॉम दिस सर्वर. और सर्वर का एक्सेस हम उसको दे नहीं सकते, बिकॉज सर्वर्स हैव द प्राइवेट आईपी. सर्वर को कभी भी वी विल नेवर एक्सपोज इट टू द इंटरनेट इन द रियल सिनेरियो, क्योंकि हैक हो जाएगा ना, फिर तो मेरी वेबसाइट ही हैक कर लेगा कोई हैकर. तो सर्वर तो हमेशा लोड बैलेंसर पे ही कनेक्ट होंगे. सो यूजर विल ऑलवेज सेंड द रिक्वेस्ट टू द लोड बैलेंसर, बट उसने बोला है कि इस सर्वर पे मैंने चाइनीज रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, देयर आर सम सिक्योरिटी पैरामीटर्स, सो आई ऑलवेज वांट टू सेंड द रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर ओनली. तो मैं चाहता हूं हमेशा उसकी रिक्वेस्ट इसी पे जाए. अब ये सर्वर अगर बंद पड़ा हुआ है, द साइट शुड नॉट बी रीचेबल टू द यूजर, तब साइट एक्सेस ही ना हो. मैंने ऐसा कुछ सिनेरियो बना रखा है. सो फॉर दैट पर्पस द सेशन परसिस्टेंस विल बी इन प्लेस. तो वही इसके बारे में लिखा हुआ है. स्पेसिफाइज दैट ट्रैफिक फ्रॉम ए क्लाइंट शुड बी हैंडल्ड बाय द सेम वर्चुअल मशीन इन द बैकएंड पूल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ए सेशन. यही इसका मतलब है. एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कब यूज होता है. अदरवाइज जहां पे कंप्लाइंस नहीं है, इफ वी डोंट हैव टू फॉलो दिस, वी विल नॉट इनेबल दिस, इट विल बी नन. जहां पे इसकी जरूरत है, इट विल बी इनेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आईपी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आईपी एंड प्रोटोकॉल. मतलब 2 सिनेरियो में ये लगता है, या तो सोर्स आईपी के टाइम पे आप ब्लॉक कर दो. सोर्स आईपी मींस मेरे लैपटॉप से मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं, सो माय पब्लिक आईपी विल बी कैप्चर्ड ऑटोमेटिकली. सोर्स आईपी एंड प्रोटोकॉल डाल दोगे, so my public IP will also be captured, plus the protocol which is running in the backend of the request will also be captured. तो ये 2 सिनेरियोज में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो. I will keep it none क्योंकि इसका कोई पर्पस नहीं है. I am not using any Chinese compliance, so just keep it none. But पर्पस आपको पता है, so in future if you get the chance to work in such company which have this kind of laws, you can always enable it. आप सीधा उसको इनेबल कर देना बस. आपको कुछ करना नहीं है, बस सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन, सोर्स आईपी या सोर्स आईपी एंड प्रोटोकॉल. बस कोई आईपी वाईपी डालना नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली कैप्चर द आईपी फ्रॉम द लॉग्स. तो कुछ करना नहीं है, बस सेलेक्ट करना है. अदरवाइज कीप इट नन. तो हम इसको नन रखेंगे. एस नेट आई विल डिस्कस, ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को. दिस इज द पार्ट ऑफ अवर टॉपिक इन लोड बैलेंसिंग, तो ये मैं कराऊंगा. क्लिक ऑन सेव. नाउ द लोड बैलेंसिंग रूल विल बी क्रिएटेड. यस पूजा. सर अब उसका प्रैक्टिकल में देखेंगे क्या, जो अभी हमने देखा था रूल अप्लाई करना, लाइक चाइना का एग्जांपल देखा था, तो हम वो प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे क्या? उसको समझना नहीं है, उसको बस सेशन परसिस्टेंस में जाके एक आईपी इनेबल करके रख दो.
मतलब आईपी वाला ऑप्शन इनेबल कर दो, मैं अपने लैपटॉप से जब भी रिक्वेस्ट भेजूंगा, मेरे को साइट एक्सेस करनी है, तो हमेशा वो सेम बैकएंड को भेजते रहेगा, बस यही होगा उसमें। ओके, तो जो वीएम रहेंगे उसका आईपी हमें देना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं देना, सेशन परसिस्टेंस डाल दो। जब पहली बार जब लोड बैलेंसिंग होगी, मैंने रिक्वेस्ट डाली अपने लैपटॉप से, तो मेरा पब्लिक आईपी ये कैप्चर कर लेगा, और जिस सर्वर पे ये गई थी फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम से उसी में हिस्ट्री रख लेगा और उसी में भेजते रहेगा। ओके। वो सेशन परसिस्टेंस है। क्लियर? यस मतलब सर। बस इनेबल करके रखना है, ऑटोमेटिकली वो आईपी कैप्चर कर लेगा मेरे सर्वर का भी और मेरे लैपटॉप का भी, तो नेक्स्ट टाइम से वो उसी पे रिक्वेस्ट भेजते रहेगा। दैट इज सेशन परसिस्टेंस, सर वो कि एक ही मतलब सर्वर पे सेशन बनाएगा। सर बट वो एक ही लैपटॉप का कैसे, सपोज अगर मल्टीपल यूजर्स है तो वो रीजन वाइज सिलेक्ट करेगा ना? लाइक नहीं, अगर। वो आईपी आईपी वाइज, नॉट रीजन। वहाँ पे ओके। आईपी का ऑप्शन था ना, सिर्फ यस पब्लिक यस। आईपी कैप्चर करेगा, यस। रीजन वाइज नहीं काम करेगा। अब ओके। उसको और स्पेसिफिक बनाना है, मान लो कंपनी को और सिक्योर करना है कि चाइना वाले रीजन का ही ले बस, तो उसके लिए फायरवॉल के अंदर फिर हमें एंट्री करनी पड़ेगी कि चाइना के इस रीजन से इस पर्टिकुलर आईपी रेंज से अगर रिक्वेस्ट आती है तो वो इस सर्वर के ऊपर भेजा जाए, तो उसके लिए फायरवॉल में चेंजेस होंगे। दैट इज अ फायरवॉल टॉपिक। ओके। क्लियर? यस। तो बहुत कुछ होता है, मतलब इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिक्योरिटी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कंपनी डू। बैकएंड में बहुत कुछ किया जाता है, because I am on the subject matter expertise level, so I also involve in the security practices। मतलब मेरे को सजेशन देना पड़ता है और इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है ये सब, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सो दैट इज व्हाई आई नो ऑल द मेजर स्टफ्स की क्या चल रहा है। जैसे आप भी जब सीनियर हो जाओगे, अभी तो आप एक पर्टिकुलर एरिया में काम करोगे, बट व्हेन यू विल बिकम द सीनियर इन द स्पेसिफिक रोल, तो आपको भी सिक्योरिटी ये भी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि सिक्योर कैसे करूं इन्वायरमेंट को। देयर विल बी सिक्योरिटी टीम, बट उसमें भी आपको कंसल्टेशन तो देना ही पड़ेगा कि ये करके हम एज्योर पे सिक्योर कर सकते हैं, फिर वो और डेप्थ में जाके सिक्योरिटी बैकएंड में फायरवॉल ये वो सब लगा देगी सिक्योरिटी टीम। बट because this is my infra, I am the architect of the infra, so I should know how I can use the best practices in order to secure the environment, in order to reduce the cost, in order to apply the best standard parameters to maintain the best compliance। तो ये सब चीजें फिर आगे आगे पता होनी चाहिए। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको पता लगेगा, व्हेन यू विल वर्क इन द इंडस्ट्री बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट लेवल कोर्सेज यू विल डू, तब धीरे धीरे फिर डेवलप होती है। इट विल नॉट कम ओवरनाइट। अभी मैं आपसे पूछूं वीएम सिक्योर कैसे करोगे, सो यू विल नॉट बी एबल टू गिव मी द आंसर। थोड़े मोड़े दे दोगे कि एनएसजी में रूल लगा के बंद कर दूंगा, बस उसके ऊपर क्या है। सो वो सब एक्सपीरियंस से आएगा आप लोगों को। दैट इज वाई द पीपल आर अर्निंग मोर व्हेन दे हैव वेरी गुड एक्सपोजर टू समथिंग। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होके भी नहीं कमा पा रहे, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ एक्सपोजर, कि तुम कितना एक्सपोजर ले पा रहे हो टेक्निकली। सो इट डिपेंड्स। सो द रूल इज ऑल्सो क्रिएटेड। रूल क्रिएट हो गया है। वी हैव द फ्रंट एंड आईपी, वी हैव द बैक एंड, we have the health probe, we have the rule. These four are the important components and we have everything in place. Now let's see the load balancing. अब देखते हैं load balancing हो रही है कि नहीं हो रही। So here I will just remove all the columns, सब हटा देते हैं। Now I don't need the public IP on my servers, क्योंकि public IP तो होते ही नहीं है कंपनी में servers पे। So I will just go to the public IP column and I will remove the public IPs from the server. This is the IP of the load balancer। ये मैंने load balancer के लिए बनाई थी front end। These two are the public IP which is connected to my web server 01 and web server 02। So remove these public IPs, हटा दो। Disassociate, yes, हट गया। Now same thing I will do on another server as well। This public IP is not connected anywhere। इसको आप refresh करोगे तो ये भी हट जाएगा अभी। And let's remove this one also, disassociate, yes। ये भी हट गया। So now let me delete these two public IPs। इनको रखने का अब कोई फायदा नहीं है। So let's delete this one also and let's delete this one also। और पब्लिक आईपी याद रखना तभी डिलीट होगी जब वो कहीं पे कनेक्टेड नहीं होगी। इफ इट इज कनेक्टेड समवेयर यू कैन नॉट डिलीट इट, इट विल गिव यू द एरर।
That is why I did the disassociate, then I deleted it. So now my public IPs have been deleted. I have only one public IP here, which is connected to my load balancer. If I will go to my virtual machine now, so there are public IPs, but this is not the public IP of the server. This is the public IP of my load balancer. ये मेरे load balancer का public IP आ गया इन पे अब देखो, because these two servers are connected as a backend of my load balancer. So if you go to the load balancer, you can verify this public IP from the front end. तो ये देखो, ये जो आईपी है, दिस इज द आईपी ऑफ लोड बैलेंसर फ्रंट एंड विच इज शोइंग हियर. तो ये सर्वर का आईपी नहीं है. इससे ये मत सोचना कि मैं रिमोट ले लूंगा. लेट मी ट्राई दिस. मैं दिखाता हूँ, देखो. देर इज अ पब्लिक आईपी बट इट इज नॉट द पब्लिक आईपी ऑफ द सर्वर. सो इफ यू गो टू द कनेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट आईपी ही दिखाएगा. एंड इफ यू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन, देर इज अ पब्लिक आईपी ऑप्शन बट देर इज नो पब्लिक आईपी. नहीं दिखा रहा. एंड यू कैन सी द लोड बैलेंसर आईपी बट यू कैन नॉट सेलेक्ट इट इज ग्रेड आउट. तो इस आईपी से रिमोट नहीं आएगा. कहीं सोच रहे हो कि हाँ पब्लिक आईपी दिखा रहा है सर्वर पे, सो आई कैन टेक द रिमोट. नो, दैट इज अ मैपिंग. एक्चुअली इट्स अ मैप आईपी ऑफ द लोड बैलेंसर. यू कैन नॉट टेक द रिमोट यूजिंग इट फॉर नाउ. अभी तो नहीं ले सकते. कैसे लेते हैं वो मैं बताऊंगा, बट फॉर नाउ यू कैन नॉट टेक इट. एंड फॉर द प्राइवेट आईपी यू कैन नॉट टेक द रिमोट. प्राइवेट आईपी से तो रिमोट आएगा ही नहीं. देयर विल बी एरर्स. तो वो तो बात का टॉपिक है. वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. सो नाउ लेट्स सी हाउ द लोड बैलेंसिंग हैपन्स. लोड बैलेंसिंग कैसे होती है अब वो देखते हैं. सो पब्लिक आईपीज नहीं है सर्वर्स के ऊपर. वेबसाइट चल रही है दोनों सर्वर्स पे. हाउ द यूजर विल एक्सेस द वेबसाइट. यूजर कैसे लोड भेजेगा. सो यूजर विल सेंड द लोड ऑन द फ्रंट एंड आईपी. वो फ्रंट एंड पे भेजेगा लोड, इस वाले पे. सो लेट मी कॉपी दिस फ्रंट एंड आईपी, पेस्ट, स्लैश, व्हाट इज द नेम ऑफ माय वेबसाइट, default.html. यही है ना. एंटर. आई शुड बी एबल टू एक्सेस माई वेबसाइट हियर. और आप लोग भी एड्रेस डालोगे तो आप लोग भी कर पाओगे. तो लेट्स वेट. इट शुड नॉट टेक मच टाइम. कभी कभी ले भी लेता है वो उसी टाइम, अदरवाइज खुल जाता है. लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. थोड़ा वेट कर लेते हैं. इफ इट इज टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम देन यू कैन रीस्टार्ट द सर्वर वन टाइम फ्रॉम द पोर्टल. नो. ओके, लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर देन. एक बार फिर रिफ्रेश कर लेते हैं, अदरवाइज वी विल रीस्टार्ट. नो. ओके, लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर देन. रीस्टार्ट. यस. एंड रीस्टार्ट. यस. वैसे रीस्टार्ट करना नहीं पड़ता है, बट अभी एक्सेस नहीं हो रही है. दैट इज वाई वी हैव टू डू दैट. सेटिंग्स सिंक नहीं हुई होगी, अदरवाइज आ जाता है ये फर्स्ट टाइम पे ही. default.html. http तो मैंने इनेबल कर ही रखा था. यस, इट इज देयर. IP is okay. 172.167.23.11. This is fine.
This is also fine. Why it is taking a lot of time? This is okay. This is okay. ओके, दिस शुड बी टीसीपी। हमने इसको यूडीपी सेलेक्ट कर लिया था, बट तब भी उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। वाई इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स सी। हाँ, आ गया। दिस शुड बी टीसीपी। वो यूडीपी चूज कर लिया था हमने, इट वाज मेकिंग द कनेक्शन लेस। तो ये गलती से कर लिया था, मतलब टीसीपी ही बताया था मैंने आप लोगों को, बट एक्सीडेंटली आई चोज यूडीपी। तो ये टीसीपी होना चाहिए लोड बैलेंसिंग रूल में, ये ध्यान रखना। जहाँ 8080 कर रहे थे, टीसीपी ही रखना है, क्योंकि यूडीपी इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल विच इज कनेक्शन लेस। तो वो फिर कनेक्शन लेस होके बहुत लेट, मतलब वो द पैकेट डिलीवरी टाइमिंग ऑफ यूडीपी प्रोटोकॉल इज वेरी हाई, इसलिए वो टाइम ले रहा है इतना। रीस्टार्ट के बाद भी नहीं एक्सेस हो रहा है, बिकॉज द पैकेट डिलीवरी टाइम इज वेरी हाई इन द यूडीपी। तो यूडीपी चूज कर लोगे, पेज खुल जाएगा, नो डाउट, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट टीसीपी इज फास्ट एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, सो यू कैन सी व्हेन आई चेंज्ड इट, इट इज एक्सेसिबल। तो वैसे टीसीपी ही होता है, एक्सीडेंटली आई जस्ट चोजन दिस वन, तो टीसीपी चूज करना। बाकी आपने रियल में देख भी लिया कि यूडीपी चूज करोगे, सो इट विल नॉट बी एक्सेसिबल, it can take a lot of time. Access होगा, but it will take a lot of time because UDP is connectionless and slow. Now, so this page is accessible, site access हो रही है load balancer के ऊपर request आने पे, and this site is accessible from server number 1, क्योंकि मैंने server number 1 पे ये वाला पेज डाला हुआ था, this is my web page 01. If you remember, ये server number 1 का है. Same link if I will copy and if I will open another browser here and if I will paste it, enter. So it is again going on web page number 1. आप में से कोई भी अगर रिक्वेस्ट कर रहा होगा इस आईपीस के ऊपर, तो किसी का 2 में जा रहा होगा, किसी का 1 में जा रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई विल ओपन इट इन द इनकॉग्निटो, सो लेट्स सी वेयर इट विल गो। अभी भी ये देखो 1 पे जा रहा है। अगर किसी ने अभी कनेक्शन बना रखा है ना, सो जस्ट रिमूव इट, क्योंकि आप लोगों का किसी का 2 पे जा रहा होगा माइट बी, तो इसलिए मेरा बार बार 1 पे वो 1 2 के स्केल पे 50% ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अदरवाइज ये क्या करेगा, वन कनेक्शन विल बी ऑन सर्वर नंबर 1, अनदर कनेक्शन विल बी डाइवर्टेड टू सर्वर नंबर 2। बट आप में से किसी ने ऐसा किया होगा कि ये पब्लिक आईपी डाल के एक्सेस कर रखा होगा, तो किसी का सर्वर 2 पे कॉन्फ़िगर्ड होगा, तो इस वजह से वो 2 का नहीं जा रहा अभी। सो इट इज 50% लोड बैलेंसिंग। अगर 4 कनेक्शन है मान लो, सो 1 कनेक्शन विल बी ऑन सर्वर नंबर 1, अनदर वन विल बी ऑन सर्वर 2, अनदर वन विल बी ऑन 3, अनदर वन विल बी ऑन 4। इस तरीके से चलता है। हमने अलग अलग साइट इसलिए चलाई थी सो दैट वी कैन सी कि 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सके। इन केस मान लो इफ माई सर्वर नंबर 1 गोज डाउन, अभी मान लो ये डाउन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट स्टॉप इट। डाउन तो नहीं कर रहे हैं हम असली सिनेरियो में, बट वी विल स्टॉप इट। स्टॉप मीन्स ये डाउन हो गया, इट इज नॉट रीचेबल। रीचेबल नहीं है, सो लोड बैलेंसर विल नॉट सेंड एनी ट्रैफिक टू दिस पर्टिकुलर सर्वर, इट विल डिक्लेयर इट अनहेल्दी। सो हेल्थ प्रोब विल डू दैट। सो अभी दिखाता हूँ मैं वो चीज भी आपको, लेट्स वेट। So now if I will go to the load balancer, ये सर्वर अभी स्टॉप हो रहा है, and if I click on this in the backend pool, after some time this server will be in the stopped state। देखो बंद हो गया ना। If there is some real technical issue, then here the issue will be appeared। कोई इशू होगा तो यहाँ पे इशू भी दिखाने लग जाएगा, देयर इज सम इशू इन द सर्वर। वन सर्वर इज रनिंग, वेब सर्वर 02 चल रहा है, वेब सर्वर 01 हैज बीन स्टॉप्ड, वो बंद हो गया है। एंड बिकॉज इट इज स्टॉप्ड, सो हेल्थ प्रोब विल डिक्लेयर इट एज अनहेल्दी आफ्टर 5 सेकंड, क्योंकि वो हर 5 सेकंड में चेक करता है, इस वजह से वो उसने इसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे स्टेटस में आ भी गया है, देखो इट इज स्टॉप्ड। इफ इट इज स्टॉप्ड, नाउ द ट्रैफिक विल नॉट बी डाइवर्टेड टू सर्वर नंबर 1, अब वो सीधा सर्वर 2 को ही जाए करेगा। सो इफ यू विल रिफ्रेश दिस पेज,
सी इट हैज बीन मूव टू सर्वर नंबर 2, क्योंकि मेरा सर्वर नंबर 1 तो काम ही नहीं कर रहा है, सो इट विल नॉट बी रीडायरेक्टेड टू द सर्वर नंबर 1 नाउ, तो वो 2 पे ही चले जाएगा। क्या हो गया, इसको हैंग हो गया। And if I will copy this and if I will open another browser as well, so here also it will be redirected to server number 2, यहाँ पे भी server number 2 को चले जाएगा, see, because of the high availability। तो मैंने 2 पे इसलिए डाला था so that I can show you how the load balancing is happening। तो अभी देख रहे हो कि 1 से 2 पे चला गया अगर एक सर्वर बंद हुआ है तो। अगर मैं दोनों सर्वर पे सेम पेज डालता तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि ये 1 पे जा भी रहा है, 2 पे जा भी रहा है, बट अब आपको क्लैरिटी है कि वन सर्वर इज डाउन, द लोड इज गेटिंग रियली ट्रांसफर्ड टू सर्वर नंबर 2, इसलिए मैंने अलग अलग डाले हैं। इन द रियल सिनेरियो सेम पेजेस विल बी देयर ऑन ऑल द सर्वर्स, सारे सर्वर पे क्लस्टर पे सेम साइट चल रही होगी। एक साइट बंद होती है एक सर्वर पे तो दूसरे साइट पे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्शन होगा, तो यूजर को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो मुझे पता है, यूजर को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सेम साइट चल रही होगी। So it will be same scenario in the real companies. Now, because in the company user will not access it from the IP, they will access it from the URL. तो वहाँ पे URL दिया जाता है उनको, ना कि IP. So उनकी IPs मैप होती है load balancer की with the URL. So if you go to the public IP, there is one option here. If you click on this, so there is one option of the DNS. Let me show you. If you go to the configuration of the public IP of the load balancer, there is a DNS option. In the DNS, they have to enter the domain names. Let's suppose if I enter lb-01 here, then this will be the complete URL, lb-01.uksouth.cloudapp.azure.com. So this is a free domain. Microsoft will not charge you anything for this. But if you want to use your own domain in the company like hcl.com, wipro.com, so you have to map the domain after purchasing it. You have to purchase it from GoDaddy. GoDaddy से domain company खरीदेगी, they will do the mapping here, then they will be able to use their own domain, क्योंकि कंपनी में आईपी शेयर नहीं किया जाता यूजर्स को, आईपी उसको याद थोड़ी रहेगा, दे विल बी एक्सेसिंग इट फ्रॉम द नेम्स। सो वहाँ पे डोमेन नेम परचेज करके मैप किया जाता है फ्रॉम द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, बट हियर वी आर यूजिंग द फ्री वन। सो फ्री वाले में ये वाला डोमेन देता है माइक्रोसॉफ्ट, uksouth.cloudapp.john.something। So I will give the name and I will save it. Now let me show you how to access it from the name. कंपनी में मैपिंग कैसे करते हैं, दैट आई विल डिस्कस ड्यूरिंग द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, कि वो लोग कैसे रियल वाले डोमेन को मैप करेंगे यहाँ पे। सो नाउ इट इज डन। नाउ आई कैन जस्ट टेक द URL, आई कैन गो टू माई load balancer, click on this, I can go to the front end. This is my front end, but I will not take the IP now, I will take the URL now. So for the URL, you can come here. If it is not coming here, अगर यहाँ पे नहीं दिखाता है, just go to the public IP address and from here you can take the name. So this is the URL, see. So just copy this and come here and paste. Then slash name of your website is default.html. Put it here, enter. Now from the name you can see the web page is coming. देखो नाम से एक्सेस हो रहा है। So this is how the real scenario will work. वहाँ पे IP वाईपी शेयर नहीं होती है, वहाँ पे URL शेयर होता है यूजर के साथ। When you access the YouTube, Google, Gmail or any site, you access it from the URL, not from the IP. So this is how the mapping done. इस तरीके से मैपिंग होती है। So this was the load balancing practical. Now two topics are still there. Load balancing तो हो गई है complete, but there are some additional topics that I would like to discuss, which is inbound net rules and outbound rules. तो ये दो topic लोड बैलेंसिंग से रिलेटेड नहीं है, बट दिस इज द पार्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग। इस टॉपिक पे मैं आपको प्राइवेट आईपी से रिमोट लेना, मतलब बिना पब्लिक आईपी के रिमोट लेना बताऊंगा। एंड विद दिस टॉपिक आई विल शो यू हाउ टू रिस्ट्रिक्ट द इंटरनेट एक्सेस। तो ये दो टॉपिक मेरे को करवाने हैं, बट आई विल नॉट कवर इट टुडे इटसेल्फ, क्योंकि ये फिर 30 मिनट्स ले लेंगे। सो आई विल कवर इट इन द सैटरडे। सैटरडे को मैं ये सब बना के रख दूंगा पहले से ही। आई विल नॉट डू इट इन द क्लास, जस्ट टू सेव द टाइमिंग। फिर उसके बाद हम सीधा ये प्रैक्टिकल करेंगे, ये सब सेटअप पहले से रहेगा। So once it is done, then we will start a new topic on Saturday, which is app gateway. अगर सैटरडे को नहीं होता है तो संडे को तो ऐप गेटवे स्टार्ट होके खत्म होगा। So you can do this and we can connect in the next session then. So thank you very much for your timing. See you in the next class. Bye.